Hi everyone, welcome to a lovely session today, especially on tax benefit and planning. This is being organized in conjunction with Taxbuddy, and we have Kanchan here from Taxbuddy who's joined us and will be taking this session. All of you do know about Sukoon Unlimited and what we do, but for those who still don't know enough, Sukoon is a company started in April this year that's focused on bringing everyday happiness to senior citizens. And as part of that, there are four areas that we focus on: emotional well being, mental well being, financial well being, and social well being. And today's session is around financial wellness to make sure that all of us are well protected, we are investing well, we are saving on our taxes, and we're making more money out of our current money. With this, Kanchan, I hand it over to you and glad to have you here. Thank you, Vibha. Thank you for the introduction. It's a amazing opportunity for me as well to be part of this webinar today with such lovely audience. And the topic that we are going to discuss today is basically tax benefits which are available specifically for senior citizens. We will also discuss some of the deductions where you can invest and grow your money for wealth purpose also. So let's start. During the session also, if you have any queries, any of you, you can just unmute yourself and ask me and we can answer that. Okay. And after or at the end, we can discuss all your queries. So the agenda is understanding tax reliefs and the benefits which are available to the senior citizens. First, we'll discuss the ITR overview, income tax overview. Basically, under income tax, currently there are two types of regime. One is the old tax regime. The other one is the new tax regime. So there is a difference between both the regimes, and there are certain benefits which are available under the old regime, which are not available under the new tax regime, and vice versa. So that we are going to discuss here, and the slab rates which are available under old tax regime and the new tax regime. That after that, I'll just give you a brief about senior citizens and why tax planning is important for them. Third, the main topic of today, key benefits which are available only to the senior citizens that we are going to discuss. Here, I will try to cover all the special points and benefits which are available under income tax for senior citizens. Apart from that, also regarding the income tax provisions, if anyone has any query, they can ask me in the session also. Various deductions, enhanced limits for the senior citizens, we will discuss under various deductions like section 80D, 80C, etc. And at the end, we can have the Q&A where you can ask any of your queries related to income tax. So let's begin. First, what is ITR? I think all of you must be aware of what is ITR because all of you must be filing your ITRs. But here, if anyone has forgotten to file their ITR for financial year 23-24, so they can file it right now also because 31st December is the last date to file the ITR for belated ITR for financial year 23-24. So in case you have missed to file the ITR, you can file it and avail the various benefits which are available to you by filing the ITR. So ITR बेसिकली एक लीगल आपकी रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ती है कंप्लायंस पर्पज से. इनके इससे काफी सारी चीजें होती है इन केस जैसे कि कुछ लोगों को ये इशू होता है या ये मिसकंसेप्शन होता है कि मेरे सारे टैक्सेस तो डिडक्ट हो गए तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है. बट आईटीआर सिर्फ आपको टैक्सेस पे करने के लिए नहीं होता. इट इज पार्ट ऑफ योर कंप्लायंस इवन इफ यू डू नॉट हैव taxable income, but your income is more than a certain threshold which is mentioned under income tax, then it is mandatory for you to file ITR even if you don't have to pay the taxes out of your pocket. Okay. So ITR is a compliance part. इसके अलावा भी आपको काफी सारी चीजों के लिए आईटीआर की जरूरत पड़ती है जैसे कि अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है. लोन अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है. तो आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है ऑफ द असेसमेंट ईयर. मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024 विच हैज ऑलरेडी पास्ड. तो किसी ने अगर वो मिस करी तो वो 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है. यू हैव टू पे सर्टेन लेट फीस एक्सेट्रा. वो उसके प्रोविजंस हैं. तो अभी इनकम टैक्स में दो तरह की रिजीम होती है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम. Now, based on your investments and your goals, financial goals and taxation goals, you have to decide which regime you want to go for. Either you will go with the old tax regime or with the new tax regime.
जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी टैक्सेस न्यू टैक्स रिजीम में ही डिडक्ट होंगे और न्यू टैक्स रिजीम में ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करनी थी आईटीआर तो आपको 31 जुलाई तक फाइल कर लेनी चाहिए थी इस साल की। अगले साल आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर सकते हैं अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में। जो न्यू टैक्स रिजीम है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड रिजीम है। इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड रेट्स हैं और मोस्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टिबल ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। सो यहाँ पे अगर आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आपका गोल है एक सिंपल अप्रोच चाहिए आपको, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, आपको सिंपल अपनी कंप्लायंस फुलफिल करनी है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। In case you want to build your wealth or you have certain investments which are tax deductible, then in that case you can go with the old tax regime under income tax. So this way you can select which regime will be beneficial in your case. So ये एक basic factor है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब क्योंकि हम ओल्ड और न्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको न्यू का एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। So standard deduction, which has been recently increased as per the budget to 75,000 by under the new tax regime. ये डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है पर वो लिमिट है 50,000 तक ही। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है आपकी अगर आपकी पेंशन इनकम है या फिर सैलरी इनकम है, दिस इज अवेलेबल ओनली टू सैलरीड असेसीज। तो आपको 50,000 या 75,000 अंडर द न्यू टैक्स रिजीम की फ्लैट डिडक्शन मिलती है। इसके लिए आपको कोई प्रूफ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो। सेकंड बेनिफिट दैट इज अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इज होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करें तो दैट इज एलिजिबल एज अ डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। बट द कंडीशन हेयर इज द प्रॉपर्टी शुड बी अ लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपने उसे रेंट पे दिया होना चाहिए, आप उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो ही आपको होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। वेयर एज अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम चाहे आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या लेट आउट प्रॉपर्टी हो, आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन पे उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। थर्ड बेनिफिट जो न्यू रिजीम में मिलता है वो होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, then if your employer is contributing towards NPS, then that is also eligible as a deduction in case this is applicable. Lastly, if you are making any contributions towards Agniveer Corpus Fund, that is also eligible under the new tax regime. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस जैसे कि पॉपुलर डिडक्शन सेक्शन 80C या मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शंस या और भी तरह की जो डोनेशंस एक्सेट्रा की डिडक्शंस होती हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में एलिजिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिजीम सेलेक्ट करनी होती है। वो सारी ऑप्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती हैं जिसके लिए आपको आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल करनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स अबाउट इनकम टैक्स। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड या आपको है तो आप चाहे तो अभी पूछ सकते हैं या फिर एंड ऑफ द सेशन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। अभी हमने डिस्कस किया कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स Right. रिजीम। Just give a second. या Anyone in the audience has any questions? Is the pace okay? Should we slow down? ठीक है, ओके let's go second. Yeah. ठीक है। सो इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है भी जो आप अभी नहीं पूछना चाहते तो एंड ऑफ द सेशन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अभी हमने न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बारे में डिस्कस किया तो लेट्स आल्सो डिस्कस व्हाट आर द रेट्स ऑफ टैक्सेशन अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम। सो जैसा कि मैंने आपको बताया द न्यू टैक्स रिजीम इज अ वेरी सिंप्लीफाइड रिजीम एंड स्पेसिफिक रेट्स आर देयर अंडर द न्यू टैक्स रिजीम जो डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज कितनी है या आप कौन से एसएससी हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर कंपनी है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आई मीन सॉरी इंडिविजुअल है या एनआरआई है या क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी सिंप्लीफाइड रेट्स हैं which are these rates are as per the latest budget. Earlier the rates were different, आई but थिंक ये हाँ करते तो हैं। latest budget के अकॉर्डिंग ये रेट्स हैं। तो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता है। 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 5% का टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। दो देर इज अ रिबेट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर नहीं है, 7 लाख पे फिक्स हो गई है, तो आपकी जितनी भी टैक्स बन रही है वो रिबेट से एडजस्ट हो जाएगी। नेट टैक्स आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा।
But even if your income exceeds even 10 rupees over and above 7 lakh, तो फिर आपके ऊपर वो प्रॉपर 5% टैक्स रेट एंड 10% टैक्स रेट लग जाएगा। तो रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से जरा सा भी ऊपर जाती है। तो थर्ड स्लैब अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इज 7 लाख टू 10 लाख की आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 10% का रेट लगता है। 10 लाख से 12 लाख की आपकी जो इनकम है उसके ऊपर 15% का रेट लगता है। 12 लाख से 15 लाख की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 20% का स्लैब रेट लगता है। और लास्ट आपका 15 लाख के अबव जितना भी इनकम है उसके ऊपर 30% का स्लैब रेट लगता है, विच इज द हाईएस्ट टैक्स अंडर इनकम। नाउ वेयर इफ वी डिस्कस अबाउट द ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। इफ यू आर अ नॉन सीनियर सिटीजन देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन योर केस इज 2.5 lakh, whereas for senior citizens but not super senior citizen, the basic exemption limit is 3 lakh। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज होकर 5 लाख तक आ जाती है। मतलब इफ यू आर 80 और अबव तो आपके लिए 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अदर रेट्स आर फॉर सीनियर सिटीजन 3 लाख टू 5 लाख की इनकम के ऊपर उनका 5% का रेट लगेगा। ऑन देयर इनकम अबव 5 लाख टू 10 लाख द रेट विल बी 20%, एंड ऑन देयर इनकम अबव 10 लाख हाइएस्ट रेट 30% विल बी एप्लीकेबल। तो ये हो गई आपकी रेट्स। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में रेट विल बी 20% और 30%। Till 5 lakh there is no tax, so that is the basic exemption limit. So these were the rates, and accordingly their taxes will be computed and they have to pay the taxes. Now coming to super senior citizens, basic overview, आप सभी को पता है as per income tax senior citizens वो होते हैं जिनकी एज 60 या उससे ऊपर है, और सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 या उससे अबव है, एंड अकॉर्डिंगली द टैक्स प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन देयर केस। क्यों ये जरूरी है कि सीनियर सिटीजन अपनी टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली करें? So it is important to do tax planning for senior citizens so that they can have a financial security in their retirement. They are properly investing and getting returns and growing their wealth, so that they have a secure retirement. They don't have to worry in their retirement. इसलिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर अपनी टैक्स प्लानिंग करें before being a senior citizen and after being a senior citizen also. So tax planning is a very important thing as it directly affects your overall wealth. Now tax benefits इसलिए भी senior citizens के लिए provide किए गए हैं ताकि they can bear with the rising cost of living, क्योंकि अभी cost of living भी बढ़ती जाती है। They have a fixed source of income, तो इसलिए ये जरूरी है कि वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां से उनको रिटर्न्स मिले। दे आर एबल टू बियर विद द rising cost of living and all are able to bear all their expenses. So इसलिए भी ये जरूरी है कि आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें। टैक्स बेनिफिट्स इसलिए भी दिए जाते हैं सीनियर सिटीजन को सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्स बर्डन, और उनकी फाइनेंशियल कोई प्रेशर नहीं पड़े उनके ऊपर ड्यू टू टैक्सेस। सो इसलिए सीनियर सिटीजन को स्पेसिफिक बेनिफिट्स दिए गए हैं इनकम टैक्स में। And lastly, to create an additional source of income through interest or other sources, उनको income होती रहे regular source में, इसलिए ये tax planning and investment is important for the senior citizens. Now coming to the main topic, what all benefits are there for senior citizens under income tax? सबसे पहला बेनिफिट जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि आपको एक इंक्रीज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी जाती है अदर देन द नॉर्मल सिटीजन। जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए, नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2,50,000 की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम, वेयर एज फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन इट्स 3 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली अंडर द इनकम टैक्स। सो उनको एक एनहांस्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी जाती है इनकम टैक्स में। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट है देर इज एन एग्जेम्पशन अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन if their age is 75 years or above to file the ITR. They are exempt from filing the ITR in case they have only income through pension and interest income. इसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है, ना ही बिजनेस से इनकम है, ना कैपिटल गेन वगैरह है। तो इन दैट केस दे कैन स्किप टू फाइल ITR. देयर इज अ प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं अगर दे आर फुलफिलिंग ऑल दीज कंडीशंस। थर्ड जो बेनिफिट है सीनियर सिटीजन के लिए वो इट इज ऑल्सो अ मेजर रिलीफ टू देम। दे आर exempt फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्सेस। उनके ऊपर एडवांस टैक्स लाइबिलिटीज नहीं आती हैं। अभी एडवांस टैक्स क्या होता है वो भी मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पूरे साल में आपकी जितनी भी इनकम हो रही है उसके ऊपर आपको टैक्स ड्यूरिंग दैट ईयर ही पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपकी जितनी भी इनकम होगी टिल 31 मार्च
उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंप्यूट करना होता है, और बाय 31 मार्च आपको वो पे करना होता है। इसकी 4 ड्यू डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। बट सीनियर सिटीजन को ये रिलीफ है, अगेन अगर आप वो पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट 234 बी और सी की लगती है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन। ओके, अब सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट है कि वो इस इंटरेस्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं, और दे कैन स्किप टू पे एडवांस टैक्स इफ दे डू नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम। तो अगर आप लोगों की कोई बिजनेस के थ्रू इनकम नहीं है तो यू कैन skip to pay advance taxes. So this is also a major relief of computing your income during the year and getting your advanced tax compliances done. So this is again a relief to senior citizens under income tax. अब क्या various deductions आपके पास available होती हैं? सबसे पहला तो section 80C, which is the most popular deduction of income tax, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अवेलेबल होती है, जिसमें आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में, या फिर करते हैं नेशनल सेविंग स्कीम में, या फिर करते हैं एलआईसी, या फिर आप अपनी एलआईसी प्रीमियम्स पे कर रहे होते हैं, which is not specifically for tax saving purpose but for financial security of your dependents. तो अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं तो आपको एटीसी में एक डिडक्शन मिलती है थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम बाय 1,50,000. 1,50,000 इज द मैक्सिमम लिमिट. सो एटीसी का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं एंड इन्वेस्ट इन वेरियस ऑप्शंस ऑफ एटीसी. जैसे कि पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वेयर द रिटर्न रेट इज ऑल्सो गुड. लॉक इन पीरियड इज 15 years, which you can enhance, and the return rate is also good, so that can be an option, and it is a secured source, government backed. So that is a secured source where you can invest for tax saving and building your wealth, as well as maintaining your portfolio and all. Now NSC is another option of ATC where you can invest. Again, it is a safe option to invest in if you do not want to take a lot of risk and want to earn a decent return. Then NSC is again an option of ATC where you can invest. LIC premium, as I said, it is not for tax saving purpose. Basically, it is for financial security. So in case आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में अवेलेबल होता है अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 1,50,000. इसके अलावा एटीसी का एक स्पेसिफिक बेनिफिट होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग पर्पस. दैट ऑल्सो कम्स अंडर एटीसी एंड द लिमिट इज 1,50,000. एटीसी से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क. You talked about ATC, right? Yes. But is this applicable if we are going for the new regime? No, no. As I mentioned, most of the deductions are not available under the new tax regime. ATC is available only under the old tax regime. And if you have any tax investments under ATC, eligible under ATC, then you have to file your ITR till 31st July of the assessment year, which is already passed for last year. I have one question. You have not mentioned investments under ELSS scheme Yes. under Yes. Section 80C. So is Yeah. it not available under your No. There are many other options available under ATC. ELSS is one of the best option of ATC, where you can invest. The lock-in period is also less, 3 years only. But many senior citizens don't like to take risk. So that is the point that has not been included. There are other options also. I'll just explain you about it more about ATC. ATC can be categorized into three parts. Okay. One is certain expenses that we generally have where we do not specifically invest for tax saving. जैसे कि आप अपना होम लोन का ईएमआई पे कर रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट है, दैट इज एलिजिबल अंडर एटीसी. सेकेंडली, अगर आप जैसे कि इफ यू आर बाइंग अ हाउस तो आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, दैट इज अगेन एलिजिबल अंडर एटीसी. LIC, as I mentioned, is not specifically for tax saving. आप उसको रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी पे करते हैं, ईएमआई इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी एटीसी में कवर होता है. तो ये हेयर यू आर नॉट स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग फॉर टैक्स सेविंग. दीज एक्सपेंसेस इफ यू हैव देन इट इज एलिजिबल फॉर इट. नाउ एज यू मेंशन्ड, इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे आपको गुड रिटर्न मिलता है एंड यू कैन कंसीडर देम फॉर टैक्स सेविंग पर्पस ऑल्सो एंड टू मेंटेन योर वेल्थ ऑल्सो. उसमें आ जाता है सबसे बेस्ट ऑप्शन ELSS, वेयर द रिटर्न रेट इज गुड. Based on past trends, it's 12 to 16% on an average. तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है टू इन्वेस्ट इन. लॉक इन पीरियड इज ऑल्सो 3 years ओनली, लीस्ट अमंग द अदर एटीसी ऑप्शंस. तो ये होता है. उसके अलावा लेकिन इसमें ये चीज होती है कि जो आप मेच्योरिटी होगी दैट इज टैक्सेबल, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होता है.
So this ELSS is also one of the good option to invest in for ATC purpose. इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो सुकन्या समृद्धि योजना होता है, where you can invest for the betterment of girl child. इसके अलावा आप PPF में invest कर सकते हैं, जो we have already covered. और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे 5 year tax saver FD if you are investing, but here some the return rates are not very good as far as the inflation is considered. आपका जो रेट होता है वो 5 to 6% के बीच में ही होता है. जैसे 5 years से टैक्स सेवर FD हो गए या और भी ऑप्शंस हैं, इनमें रिटर्न रेट इज नॉट वेरी गुड. सो उनको आप कंसीडर कर सकते हैं if you do not want to take much risk, but just for tax saving and to invest. If you are investing, then you can go for such options. But ELSS is the good option to invest in if you want to. Okay. Any other query? Yeah, I Another, want to know another about option is your senior citizen savings account under 80C. You can Yes, yes, invest up to 30 lakhs there. yes. And I'll cover that. I'll cover okay. that in the upcoming slide. I wanted to know about advance tax. We don't pay advance tax, you said. We needn't. But You do which not is need. the last date for my paying the tax? Is it March 31st or is it July? As I mentioned, under income tax, there is a concept of advance tax, जिसके according आपका during the year whatever tax is applicable in your case, you have to pay that. But to give relief to the senior citizen, a provision has been introduced in income tax where they do not need to pay advance tax. They can compute their income tax while preparing their ITR. तो वो self assessment tax pay कर सकते हैं. जब भी आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप अपने taxes pay कर सकते हैं. Condition here is आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट डील इन FNO. आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए. बिजनेस Yeah, हेड में but आपकी अगर इनकम है तो देन यू विल हैव टू पे प्रॉपर टैक्सेस ड्यूरिंग द if I ईयर. am receiving only FD interest and pension, then Yes. when should I pay? Can I pay in July without Yeah, penal? yes. In that case, you can pay the whole of the taxes in July if you want. That's the point. Because otherwise, we have been paying generally by March end before retirement. That is why I wanted. Yes. Advanced tax concepts are there, but if you're a senior citizen, then there is an exemption available to you as per income tax. Okay, thank you. Madam, one more thing I would like to ask. See, actually, if I'm doing share business, then is it considered as a business or what? No. Share trading is considered under income from capital gains. If you'll sell your shares, listed Uh-huh. or unlisted one, then it comes under capital gain head. Oh, capital gains in both the case, in old case and the new case, it is attractive, no? It attracts, Yeah, no? yes. The rates are specific under capital gain. It's 15% till last year. It was on short-term capital gain, but now it has been enhanced to 20% as per the latest budget. The short-term capital gain rate has been increased. And long-term, it was 10% earlier with exemption up to 1 lakh, which has been increased to 12.5% and exemption up to 1,25,000. So these are changes as per the latest budget. And apart from that, if you have a long-term capital gain from sale of building or something like that, other than the listed one, then in that case, the rate is, earlier it was 20%, now it is 12.5% without indexation benefit. So these are some changes as per the budget, latest budget under capital gains. Right. Okay. Thank you. Question here is, does capital gain tax has to be paid each quarter, or this advance tax not required, we can go in the end of the year? See, as per the provisions of income tax, senior citizens are given the exemption if they do not have a business income. So if you do not have any business income, then you are given the exemption. But my suggestion would be, you can pay the entire tax, compute the whole of your entire tax by 31st March and pay it. And in case you have paid excess tax, you will get the refund of it. So my advice is that. But no, that is not No business, capital gains tax is there. sorry. I don't have any business, but capital gains tax is there. Yeah, you can compute whole of your taxes by 31st March. You don't need to pay it right now. You can pay whole of your taxes by 31st March. But as per the law, there is an exemption to senior citizens. If they do not want to pay advance tax, they can skip it and pay while filing the ITR. Before you come the age of 60, you are supposed to pay every quarter.
No. That is till the age of 60 if you are not senior citizen. Sorry. Now not necessary. After 60, it's not necessary as per income tax law. Thank You will not be you will not have to pay that 234 B and C interest as per law. But we always suggested that compute your taxes during the year by 31st March. You don't have to pay on specifically on capital gain. You don't have to pay the taxes on in that quarter itself. You can pay it by 31st March also, because capital gain you can change during the year also. It's not like other income which are fixed like interest income and all. So capital gain taxes you can pay by 31st March if you wish. Otherwise, you can skip and pay by filing your ITR also. Any other query? I needed to check if I sold a property in the month of May. So do I have a choice to pay the tax with the old or the new regime? See, property tax comes under special rate of taxes. It's not applicable as per slab rate. So new regime and old regime difference is only for the incomes which are taxed as per slab rate. So property tax you will have to pay based on 20% rate or 12.5% without indexation benefit. So that you have to pay by 31st March. You can compute it right now and pay by the upcoming due date also. So my question to you was that I have a choice to choose, right? Yes, new regime, as I mentioned, new regime and old regime is not applicable on this capital gain portion. Okay. It's for salary or interest from interest incomes, etc. So it will not make any difference for the specifically for the capital gain point. You have to compute whole of your income and then compute taxes under both the regimes and then select which regime is beneficial for you. Under old regime also 20% or 12.5% rate will be applicable in your case, and under new regime also the same rate will be applicable for capital gain. It's not taxed as per slab rate. Is it clear to you, ma'am? Okay. So moving ahead, and you can ask your queries further also. The other benefit which is available to senior citizen is interest on deposits. So जो नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं उनको बेनिफिट होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के ऊपर एक डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स वेयर दे गेट 10,000 एज डिडक्शन. जो भी उनका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और एफडी के इंटरेस्ट पे नॉन सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं होता है, बट सीनियर सिटीजन को यहाँ पे बेनिफिट होता है अप टू 50,000. तो अगर आपका सपोज सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट का टोटल 45,000 है ड्यूरिंग द ईयर, so first that will be included as your income from other sources, and then you will get a deduction under section 80 TTB amounting to 45,000. The maximum limit is 50,000, but क्योंकि आपकी इनकम ही 45,000 है उससे, तो आपको उतनी डिडक्शन मिल जाएगी. तो इन शॉर्ट आपको अपनी जेब से नहीं कोई टैक्स पे करना पड़ेगा उस इंटरेस्ट इनकम में. सो दिस इज अगेन अ बेनिफिट गिवन टू सीनियर सिटीजन कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे भी उनको बेनिफिट होता है मैक्सिमम अप टू 50,000 अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम. इसके रिगार्डिंग किसी क्वेरी है क्या? Even this is only under old regime, not new regime. Yes, new regime, ma'am, most of the benefits are not available because rates वहाँ पे बहुत कम कर दी गई है. तो अगर आप But टैक्स, you have a standard deduction up to 75, don't you? yes, standard deduction is available if you have pension income or salary income. Standard deduction is a flat deduction, you don't need anything. That 75,000 is the limit for new regime. Old regime में वो 50,000 ही है. Madam, you told us that up to 7 lakhs, no tax in new regime. Yes. If your Correct. total income is up to 7 lakh, then you will not have to pay any tax. If it exceeds even by 10 rupees by 7 lakh, then proper tax आपके ऊपर लग जाएगा. Then these capital gains and all included in that 7 lakhs now. Capital gain, no. Rebate benefit is not available on special income tax rates. Like capital gain हो गया आपका, या फिर आपका ये हो गया FNO की इनकम हो गई, या कुछ भी इस तरीके की जो आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेस लगते हैं उनके ऊपर आपका कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलता है. FNO इज टैक्स्ड एट स्लैब रेट. सॉरी, आई इंक्लूडेड दैट. Capital gain is taxed at the special rate 20%, 12.5%, 15%, 20%. Specific rates है उसकी. Another is winning from lottery, games, etc. इनके ऊपर specific rates है. क्रिप्टो में अगर आप डील करते तो 30% की रेट होती है. तो these are special rate of incomes जिनके ऊपर specific rate mentioned है इनकम टैक्स में. इनके ऊपर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वहां पे आपका टैक्स लग जाएगा. उस इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा. ओके, सो एनी अदर क्वेरी related to the points that we have discussed till now? Okay, moving ahead.
जो अनदर बेनिफिट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, दिस अगेन इज अवेलेबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम ओनली, विच इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का नॉन सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में ओनली 25,000 का, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए दिस डिडक्शन हैज बीन इज इंक्रीज्ड अप टू 50,000, तो उनको 50,000 तक का बेनिफिट वहां पे मिलता है। तो इफ दे हैव इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम अप टू 5,50,000 सपोज, तो अगर उन्होंने एटीडी में इन्वेस्ट कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वो पे कर रहे हैं तो 50,000 का बेनिफिट वो वहां पे ले सकते हैं, और इससे उनको बेनिफिट हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस प्रीमियम में 50,000 का बेनिफिट है। इफ योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो पेइंग द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन योर बिहाफ, then they can avail this 25,000 for self and 50,000 for paying premium on your behalf, 50,000. So total उनको 75,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। In case senior citizens, if you are paying for yourself, then you can take benefit of 50,000. Okay. So this is again a benefit under income tax for senior citizens, but again it is available only under the old tax regime. एक और बेनिफिट जो है 80DDB, but this section is applicable for specified disease mentioned under rule 11DD of income tax. ये काफी सीवियर डिजीजेस होते हैं जैसे malignant cancer, neurological disorders and all. तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है। This again is under the old tax regime only. The limit is 40,000 for non-senior citizens, but the limit for senior citizen is increased up to 1 lakh rupees. So 1 lakh रुपए तक का जो भी आपका expenditure हो रहा है, that you can avail as a deduction under income tax under section 80 DDB. तो ये है for self or dependents if you are making any payment. Now senior citizen saving scheme, इसके बाद हम आपकी सारी queries ले सकते हैं जितनी भी आपकी हैं income tax से related. Senior citizen saving scheme is again a very good option to invest in for senior citizens. यहाँ पे आपको बहुत अच्छा return rate भी मिलता है comparatively others के according. Maximum you can invest is 30 lakh, minimum you have to invest is 1,000 rupees. इसमें जो interest मिलता है वो regularly आपको quarters में मिलता है. At the beginning of the quarter you will get the interest. So accordingly you can plan your taxes. Premature आपका withdrawal भी allowed है, but you have to pay certain interest and penalties for that. आपकी जो भी withdrawal है, मतलब जो भी आप mature withdraw कर रहे हैं उसमें से कुछ portion cut करके आपको balance आपको दे दिया जाएगा. This is eligible under section 80C as a deduction. तो ये भी again a good option to invest in and is available to senior citizens only. So this can be an option where you can choose to invest in if you don't want to take much of the risk and want to invest somewhere for building your wealth. Now concluding the session, income tax mein there are several benefits that we have discussed for senior citizens. Apart from this, there are other options to invest in also, and other deductions available also, but those are available both for senior and non-senior citizens, जैसे कि 80C हो गया और 80CCD1B हो गया, which is for NPS, और उसके अलावा आप donations करते हैं तो that is eligible as a deduction, and there are many others which are available as a deduction under the old tax regime. By properly planning your taxes, you can save a lot in your taxes and thus secure your retirement. So these are the major key takeaways of today's session that we had discussed. Now we can take up all your queries that you have. In case you want to ask any of the queries, you can just ask me. Just one question for you, ma'am. Yes. 30 lakhs you said is the maximum limit for senior citizens savings scheme. Yes. Suppose I have invested 5 lakhs at the time of my retirement. Then I have additional funds which accrue to me because of whatever reasons. I invest further amount of money. So I'll be eligible for 80C benefit in the future investment, or 30 lakhs has to be invested at one go? No. You can invest. It's not that you have to invest in one go. जिस भी साल में आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उतने का आपको डिडक्शन मिलता है, बट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 80C इज 1,50,000 एज पर टैक्स प्रोविजंस. आप इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहते हैं, बट ईयरली आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 की ही मिलेगी. तो इस साल आप जितना भी इन्वेस्ट करें उसमें से 1,50,000 का, नेक्स्ट ईयर आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 1,50,000 का. और है जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, जैसे 30 लाख का मैंने कर लिया, 5 साल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 2 साल के एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा नहीं सकते?
हाँ, there is a limit. आप वो उसको 2 साल तक ही extend कर सकते हैं, but you can open multiple accounts. तो आप दूसरा account खोल सकते हैं with your No, no, spouse. you're not getting my question. Say 30 lakhs मैंने invest Extend कर नहीं कर 5 सकते. plus 2 years, 7 years मेरे हो गए. I am still surviving. So I want to invest again. So I have to invest that money. I can invest that money again 5 years plus 2 years, or I am not allowed to invest. In the same, as per what I know, you have to close that account and you can open a new account and invest again. Okay, I can open new account and invest. Nobody will Yes. come back to me and say that you have enjoyed 7 years No, senior no, no. citizen savings scheme benefit. Now you have taken this additional interest, refund it. No, no, no. There is an option to open multiple accounts also. So once you have done that, you can open it after that. So for single account, you can keep it for 5 years and extend by 2 years as per the provisions. And further, you can discuss this with the account where you are opening the account, the bank and all. There, they will guide you proper on this part regarding the investment. But Okay. yes, as per the provisions, 7 years is the limit, and there is no limit on opening multiple accounts, so that you can consider. You have not discussed about one provision that your child can give you some money, and that is also qualified as tax deducted expenses for him, and we can enjoy that money. No, no, that is gift. That is gift. Gift, yes. Somebody. Gift is a separate provision, sir. That is not specifically for senior citizens. Gift is a provision where if you are getting any income as a gift from any person who is your relative, linear ascendant or descendant, close relative, blood relations, you can say, then in that case, that is not taxable up to any amount. So if you are giving any money to your son or your son is giving any money to you, vice versa, both are not taxable. Any amount. Yes, anyone. But if your friend is giving to you, then that is taxable. And You there mean is, to say that it has to be blood relation. yeah, there is a specific definition of relatives as per income tax, and you have to fulfill that. And then you can do this. Gift is not taxable for relatives. Any amount, any number of times. Yes, any amount. There is no limit. And there has to be some gift deed, or you can just give some money and say that this is a gift. You can just give it, and whenever you are filing your ITR, you can show it as an exempt income, as a declaration. Okay. Madam, is it applies for only son or to daughter? Relatives, sir, as per daughter, if not married, is also comes under the definition of relatives as per income tax. So yes, it comes under the definition. Even Oh, after okay. daughter comes under the definition of relatives. So yes, it applies to daughters also. And also there is a provision under gift that on the occasion of marriage, if you are giving any amount, that is also not taxable in her hand. No, So, no, my daughter is she got married. See, actually, she will have a kid. At that time, I may have to present some amount. Is it taxable at the time? no, it will not be taxable in her hand. You can give it to your Okay. daughter. To your daughter. To my daughter as well as my grandson or granddaughter. Yes, that also comes under the definition of relatives. But Okay. that you can connect with me after the session for that more clarity on that point regarding the grandson portion. But if you're Okay. fulfilling the condition of relative, then yes, it's there are specific relations which are mentioned under the definition of relative. Right. Thank you. I wanted to know about this Pradhan Mantri Vayovandana Yojana. That was there in LIC. I hear that it has been discontinued. Is that so? I'm not aware of that scheme. Pradhan Mantri, which yojana, ma'am? Vayovandana Yojana. Yes, madam, that has been discontinued. Because I had invested some 15 lakhs at that time, and I was hoping that once I get my pensionary benefits, I could invest some more. So that has been discontinued. Since when? Discontinued. Madam, actually 15 lakh was a limit for that, and 15 lakh was for senior citizen saving account. Now they have merged it under senior citizen as 30 lakh. And Yes. that is the reason that has been closed. Okay. Now only post offices offer senior citizen, or Banks also offer. Yes. So yes, ma'am, that has been discontinued. So you can accordingly plan your investment further.
कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको. Actually merged, not discontinued. Yes, merged with senior citizens. The limit has been increased under senior citizen. Earlier it was 15 lakh, which has been now increased to 30 lakhs. So yes, you can say that. तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और ऑप्शन जहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिले वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये कुछ ऑप्शंस. And are the rates the same for SCSS across banks and post office? Yes, madam, it is fixed. Yes. Thank you. So one more thing, during this session only, I would like to display is we had created one landing page for you all in case you have any queries related to income tax or you need any assistance for filing your ITR or anything related to compliance. We provide a lot of compliance services also. So you can just connect with us. It's a very simple landing page where you can just register with your mobile number and you will get access to our tax experts who will guide you based on your query. A personalized guidance will be given to you. And we have given an exclusive 15% discount for you all since you are Sukoon members. So this we have created. We'll share it with the Sukoon team and they will share it with you. Okay. And these are our email IDs and mobile number where you can connect with us. Support mail IDs here for Taxbuddy. This is my official mail ID and my mobile number where you can connect with me in case after the session also if you have any query you can just connect and ask me. Okay. And these are our social media handles where we post a lot of content that can help you ऐसे schemes वगैरह भी हम काफी सारी चीजें डालते हैं जो आपको नॉलेज में भी इंक्रीज करेगा और सेविंग्स वगैरह में भी हेल्प करेगा. तो कुछ भी नया अपडेट आता है तो आप हमारे सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं. तो यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया आल्सो. सो यस, इन केस एनीवन हैज एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टैक्सेशन आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. Thank you, Kanchan. I think it was a very, very informative session. थैंक यू. A lot of depth got covered. Like Kanchan mentioned, everyone, Taxbuddy is partnering with Sukoon and giving exclusive 15% discount to all of you for tax planning services. We will share the details along with the website, custom website on the community. Go ahead and feel free to speak to Kanchan and the Taxbuddy team. Thank you. Thank you for that, Kanchan. And have a good evening, everyone. Thank you. It was wonderful session and lovely audience. Thank you.